So, Namaskar all of you. So, this is a presentation on new batches for Odisha Judicial Service for the month of July 2024. So, July 2024 रो जो हमारा batches अच्छी Odisha Judicial Service में. So, total हमारा जो देखिबा ताले we are having around 6 different courses. Okay, till success integrated batch, 1 year integrated batch, 1 year pre-com main answer writing batch, prelims test series, mains test series और interview preparation batch. So advantages कौन होची हमरो aarohan classes रे join कले. First ताला आपनकर जो माने classroom batch रे join करछंती तांको पई reading room टा available रहउची. तो reading room especially जो माने hostel रे रहउचंती और तांको हॉस्टल रे पढ़िया पे प्रॉब्लम होची तो से माने रीडिंग रूम रे आपनकर पढ़ी परिबे सकाळ 8 रु राति 8 टाइमिंग तार रहउची. तो रीडिंग रूम फैसिलिटी टा आपनकर रहउची. तापर रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहउची. तो जोटा कि मेंस एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट काहे ना ओजेएस रे बहुत कैंडिडेट्स अछंती जो माने लॉटा जानी चंती ठीक रे किंतु से माने रिपीटेड अटेम्प्ट्स परे भी तांको नाटा मेरिट लिस्ट रे आसेनी काहे ना से जो स्टाइल रे लेखंती मे बी सेटा एग्जाम ओरिएंटेड नो. तेणु रेगुलर आंसर प्रैक्टिस जदि आपण करूचंती ताले जो पर्टिकुलर स्टाइल रे लेखिबा कथा एग्जाम रे एक्सक्यूज मी सेटा आपण जानि परिबे. तापरे टेस्ट सीरीज आपणकर रेगुलर क्लासेस वीकली टेस्ट प्लस टेस्ट सीरीज भी आपणकर सेगुडा एथरे इंक्लूडेड थाए. तार मॉडल आंसर एक्स्ट्रा सेडा सब आपण पाई जिबे ऐप थ्रू रु. स्टडी मटेरियल प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा हुए. डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ मेंटर्स इन ऑल सेशंस. तो क्लासरूम स्टूडेंट्स तो एटा डायरेक्टली से माने इंटरेक्ट करि परिए फैकल्टी संगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करंती थ्रू गूगल मीट. जहाँ भी आपण डाउट्स हैला इमीडिएटली भी आपण पचारि परिबे थ्रू वॉइस. और जहाँ रिसोर्सेस आपण को रहला दरंतु स्टडी मटेरियल रहला क्लास नोट्स रहला एगुडा सब आपण ऐप थ्रू रु आपण एक्सेस करि परिबे. तो कोर्स हमरो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज रुए जुडिशियल सर्विस पे. तो अर्थ हला आमे कोनोसी पोर्शंस छाडुना. तेनु प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू ऑल 3 पार्ट्स और इवन सेथरे भी मेंस रो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अछि पांचटा जाक ऑप्शनल आमे प्रोवाइड करूछु. तो आपण ता भितरु जो तीनटा आपण को इच्छा आपण चूज करि परिबे. आमे आपण को पे चूज कर दोनु कि आमे ई तीनटा ही दबु. वी आर प्रोवाइडिंग ऑल 5 ऑप्शनल्स. आपण निजे ऑप्शनल्स देखि कि बहुत जण करता है कि को ऑप्शनल टा नबु. तो आपण पांचटा जाक ऑप्शनल रो वीडियोस देख सारला पर भी आपण डिसाइड कर परिबे. इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग रहउची जोटा कि 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट रहउची. जदि आपण कोनोसी गोटे डाउट आसिला तो सेटा थ्रू व्हाट्सएप भी आपण पचारि परिबे. तापर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपण कर रहउची क्लासरूम पिलांग पई भी और ऑनलाइन पिलांग पई भी. तो टेस्ट जेमति मु कहली हमरो बहुत गुडे टेस्ट ओपन टेस्ट भी थाए जोटा हमर टेलीग्राम चैनल रे भी दिया हुए. तो सेटा भी ऑल स्टूडेंट्स कैन यू नो अटेंड दोस टेस्ट्स. ओके हमरो मैक्सिमम फोकस था आंसर राइटिंग ऊपर काहे कि ना आंसर राइटिंग ऊपर माने आपन मॉडल आंसर टा दिया हबो कि एई जदी क्वेश्चन पड़ला ताले एई टाइप रो आंसर टा आपन लिखिबार अछि. सेतरे कोन कोन कंपोनेंट्स रहइबो आंसर रो. ठीक अछि. सेम कंटेंट रे तीनटा पिला तीनटा डिफरेंट टाइप रो आंसर लिखिबे और मार्क्स भी अलग अलग आसे सेतरे. ओके तो पर्टिकुलर को स्टाइल रे लिखले मते अधिक मार्क मिलिबो सेटा मते जानिबार अछि. तापर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जनकर इंग्लिश और ओडिया रे इशू थाए. ओके स्पेशली जदी ओडिया लैंग्वेज आपण प्रॉब्लम अछि ताले से ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन क्वेश्चन 50 मार्क्स आपनकर अफेक्टेड हबो. तो ता पई भी हमर प्रॉपर क्लासेस थाए. जो माने लमसम दे पारु नांती लमसम देले आपण 10% वेवर मिले. जदि आपण लमसम दे पारु नांती ताले आपण ईएमआई रे भी दे परिबे. ओके मंथली इंस्टॉलमेंट्स रे भी दे परिबे. सो एटा हमरो टाइम टेबल टा. दिस इज द टाइम टेबल जोता कि हमरो इंग्लिश क्लासेस रहउची 10 टा रु 12 टा मंडे ट्यूसडे. ओके इंग्लिश एंड ओडिया. तापरे वीकली टेस्ट्स आपनकर प्रीलिम्स और मेंस रो 4 टा रु 6 टा रुए और 6 टा रु 8 टा इंपोर्टेंट मैक्सिम्स और इंपोर्टेंट केस लॉ रो क्लास रुए.
आमर जेतु संडे टा हॉलिडे न थाए तो आमर वेडनेसडे टा हॉलिडे थाए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यू आर हैविंग 3 sets of theory classes taken by 3 different faculties ओके जेमति कि एबे theory 1 रे आपनकर आईपीसी चलची जोटा कि लास्ट बैच जेतु नेक्स्ट बैच रु आईपीसी टा रहिबनी तो एटा प्रोफेसर डॉक्टर पीके राणा सर नउचंती जे कि एमएस लॉ कॉलेज हो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज रो एक्स प्रिंसिपल तापरे सेकंड थ्योरी एबे करंटली चलची ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जोटा अभिजीत सर नउचंती आउ थर्ड आपनकर एटा हमर नुवा लॉस जोटा अछि दैट इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेटा चलची एबे ओके जोटा कि मु नउची निजे तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपन तीनटा स्टैट्यूट चलता है बहुत जनकर एमती थाए कि हमें जल्दी कोर्स सार दउ तो आपन फुल टाइम प्रिपेयर करछंती ताहले भी आपन पूरा तीनटा जगह क्लास अटेंड करिकी आपन जल्दी भी कोर्स सारी परिबे ऑल्दो दैट इज नॉट रेकमेंडेड कि आपन तीनटा स्टैट्यूट एक संगे पढंतु मैक्सिमम दीटा काहेना सेटा पढे पुनी डिटेल्स रे आपन पढाय पड़िबो गोटे चैप्टर सरला तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री और मेंस रो सेगुडा करिया पड़ियो सो इट टेक्स टाइम एमती नाही कि बैरक धरि कि थरे पढी देली तो मोर स्टैट्यूटा सरी गला राइट नाउ कमिंग टू द कोर्स डिटेल्स तो फर्स्ट कोर्स जोटा हमर फ्लैगशिप कोर्स सेटा हला टिल सक्सेस इंटीग्रेटेड बैच एबे टिल सक्सेस इंटीग्रेटेड बैच रे बेसिकली तार जो फीचर्स उडा अछि तो एथरे जा जा मु कहली प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऐप एक्सेस रोची टिल सक्सेस माने ऐप ताको डिफाइन करछि 30 इयर्स 30 वर्ष पर्यंत आपनको एक्सेस रहइबो ओके तापर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो मॉडल आंसर्स करिका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंटरव्यू सपोर्ट टिल सक्सेस पाइला पर्यंत ओके सो दैट इज बेसिकली जेतला हम टिल सक्सेस कहूछु जो ऐप हम यूज करछु ऐप रे टिल सक्सेस हैज बीन डिफाइंड एज 30 इयर्स 30 वर्ष पय आपनकर ऐप टा ओके आउ जहां भी आपण पाइला पर्यंत आपण सेटा ओके एक्सेस करि परिबे राइट तो एटा बेसिकली जो माने कि जदि कि पैटर्न चेंज होउची से माने अफेक्टेड हेबेनी जेमति एबे नेक्स्ट ईयर ए वर्ष 2024 बैच रे आपनकर न्यू लॉज आसे जिवो ओके तो जो माने 2 इयर्स ला प्रिपेयर करछु कि 3 इयर्स ला प्रिपेयर करछंदी एबे तांको किछि छोट छोट चेंजेस करिया पय पड़ियो बहुत बड़ तो चेंज नो बट छोट छोट चेंजेस करिया पड़ियो तो ए इंटीग्रेटेड बैच जो मन जॉइन करछंदी दे आर कवर्ड तांको एक्स्ट्रा किछि कोर्स फी दबार नै कि सेमति किछि करिवार नै ओके तो से मानको पे तो एथरे कोन ना जो माने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अछंती जोन चाहउछंती कि नै फर्स्ट अटेम्प्ट रे हम क्लियर करिवु तो से माने भी जॉइन कर परिबे जो माने ग्रेजुएशन सारी सरचंदी एलएलबी बट से माने चाहउछंती कि हम पाइला पर्यंत हैंड होल्डिंग हो तो से माने भी जॉइन करि परिबे क्लासरूम रे आरो फीस होची 40000 जोटा आपण इंस्टॉलमेंट्स रे दे परिबे आउ जदि वन टाइम दउछन त 10% रे आपनको ओके डिस्काउंट मिलुची तो सेटा 36000 रोची ऑनलाइन रे जो माने टिल सक्सेस बैच नउचंती तो 30000 रोची इंस्टॉलमेंट्स रे 27000 रोची लमसम तापर नेक्स्ट कोर्स टा हला एग्जैक्टली सेम कोर्स किंतु ड्यूरेशन टिल सक्सेस जगह 1 ईयर रेस्ट एवरीथिंग इज सेम बट ऑल द फैसिलिटीज आर फॉर 1 ईयर ओनली तेणु मु ऑलरेडी जानी छी मु थरे मेंस देइची कि थरे इंटरव्यू दे सरची बट मोर मेंस रे मार्क कम अछि तो केमिति कोन मते लिखिबार अछि मते ता ऊपर ही फोकस टा दरकार ठीक अछि तो सेथि पई आपनकर ए बैच टा रहउची जोटा ऑल अदर फैसिलिटीज आर सेम एज द integrated till success batch किंतु ड्यूरेशन हियर इज ओनली 1 ईयर आरो कोर्स फी रहउची 20000 1 ईयर पई क्लासरूम रो आ वन टाइम देले एटा 18000 रहउची ऑनलाइन 15000 आ वन टाइम देले 13500 रहउची तापरे बहुत जन एमती थे कि जो हम खाली लेखि आंसर राइटिंग ही प्रैक्टिस करिवार अछि तो आंसर राइटिंग जदि प्रैक्टिस करिवे एटा 1 ईयर बैच टा रहउची तो एथरे क्लासरूम 10000 डेटा रहउची in installments and 9000 in lump sum or online 6000 installment or 5000 lump sum eta rochi only for answer writing eta तापर टेस्ट सीरीज रोची प्रीलिम्स और मेंस रो टेस्ट सीरीज एटा सही पर्टिकुलर टाइम रे ही आपनकर ओके प्रीलिम्स टाइम रे कि मेंस टाइम रे आपण जॉइन करि परिबे तार प्रीलिम्स रे एथरे 20 टा टेस्ट रोची जोथरे कि आपनकर 3500 क्लासरूम और 2500 ऑनलाइन तरह कोर्स फी रोची सेमती मेंस टेस्ट सीरीज भी 20 टा फुल सिलेबस टेस्ट रोची जोथरे 3500 तार क्लासरूम और 2500 ऑनलाइन तार कोर्स फी रोची तापर इंटरव्यू
एटा मेंस रो रिजल्ट बाहरला परे इंटरव्यू आपनकर दी प्रकार रोची जोटा गोटे कि 1 ईयर एक्सेस रोची आपन पांचटा मॉक इंटरव्यू जोटा कि 2500 रोची प्लस थ्योरी क्लासेस से दुए आउ गोटे ओनली दीटा इंटरव्यू रोची दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जो माने मेंस क्वालिफाई करछन तो ये जुलाई 2024 रे हमर जो दीटा बैचेस थिला तो सेटा आपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओके ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी एटा 18 जुलाई रु स्टार्ट हेची चारटा वाला बैच रो आ नुआ जोटा स्टार्ट हो सेटा 29 जुलाई रे स्टार्ट होची दैट इज बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेटा 6टा वाला बैच एटा क्लासरूम एंड ऑनलाइन बोथ द क्लासेस आर बोथ क्लासरूम एंड ऑनलाइन तो आउ जदि किछि डिटेल्स आपनको दरकार ताहले आपण व्हाट्सएप की कॉल करि परिबे 7684054656 को सो बेसिकली ओडिशा जुडिशियल सर्विस आपण जो देखिए तार लेवल ऑफ कंपटीशन टिके हाई कारण हला कि मेंस रु इंटरव्यू आ फाइनल सिलेक्शन को जीवा पई जो देखिबे ताहले तार रेशियोटा बहुत ही टफ ओके कहीं ना जे भी 45 अराउंड 40 प्लस रखिले से मेंस देले जे 45 रखिले से इंटरव्यू को गले बट देन इंटरव्यू रे कोन होची ना बेसी पिला रहि जाउछंती केबे केबे जंती दी वर्ष आगु बहुत अधिक पिला थिला इंटरव्यू रे ता भितर खूब कम पिला ही फाइनल लिस्ट रे आसिले ओके सो सेथि पई रिटन पार्ट और मेंस पार्ट ता बहुत इंपोर्टेंट ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो माने प्रिपेयर करछंती जुडिशियल सर्विस पई गोटे जिनस मन रखिए आप प्रॉपर प्लानिंग रे आपको प्रिपरेशन करिवार अछि ओके लाइक गोटे 2 इयर्स हराइजन कि 3 इयर्स हराइजन सेमती आपण जेबे देबे से हिसाब रे देखि के आपको प्लान करिवार अछि ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नमस्कार so So you have given the weekly test. So now we will have a discussion on the weekly test. So syllabus a week में कौन अच्छी ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 to 20 section 1 to 20 आज prelims test थिला खाली अपना mains test था रहेगा. Okay. So let us now come to the discussion. What is the main objective of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023? Okay, so to establish punishment for crimes, to outline procedures for investigation of crimes, to provide rules and principles of evidence for fair trials, or to regulate the appointment of judges. Okay, अपना ये टा भी पाखरे रखी थांतो. That is your bare act. ताले अपन को easy होगा. Okay, ताको access करिया पे. Right? So what will be the answer for the first one? First question कौन answer Sir, देचो? option C. To Option provide C. rules and principle of That is correct. Okay. जोड़ा की clearly अपनकर bare act रे. Okay. देइची प्रथम रे. So if you see here. Okay. An act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial. Okay. So question 1 raw answer अपनकर C होगा. That is to provide rules and principles of evidence for fair trials. Okay. So now come to question 2. तो सेटा जेतेबेले आपण सबमिट करिवे ऐप रे तापर तारो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आसीबो. ओके सेटा आपण देख दे पारे. अंडर BSA 2023 which of the following is not considered evidence? Oral statements made in court, physical objects used as proof, hypothetical scenarios created by counsel, or electronic records. कौनटा हबो एटा? Sir, C. Hypothetical scenarios created by the counsel. बाकी तीनटा okay evidence रा definition रे हमरा आसुची. Okay, it comes under the definition of evidence. Okay, so जोटा कि हला evidence includes oral statements,
physical objects, electronic records. ठीक अछि तेनो hypothetical situation कि hypothetical scenario okay सेटा evidence under रे जाउनी. Now come to the next question, question 3. So C is the answer for question 2. Now come to question 3. According to section 3 of BSA, what does fact include? Okay, only physical events, both physical events and psychological states, only psychological states, or none of the above. Sir, B. Both physical and psychological states. Both physical events and psychological states. Both physical events and psychological states कहउछन्ती. एथरे गोटे जिंसो टिके माइंड रे रखिबे. In some of the questions, okay, जोटा आपनकर especially जोटा रेस चुरिकाटा ऊपर देछि, ओके एटा आगु देखिबा सेटा. सेठी से कोन करछि ना sections गुडा ओके सेटा चेंज करि देछि. Okay, so that we have to remember. But anyway, a question asle mu koibi. So you see here in section 2 definitions, right? Fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by senses, or any mental condition of which any person is conscious. Okay, so physical and psychological states. Okay, so B will be the answer for question number 3. Now come to question number 4. What is the definition of document under BSA 2023? Only physical written records, only electronic records, or any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or any other means, or none of the above. Sir, option C. Any matter Option expressed. C. Okay, so option C would be the answer. एगुड़ा सब direct आसीची तो एतरे किछि भाबिबार नाही. Excuse me. What is the purpose of relevancy of facts as outlined in section 4 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam? Okay, तो एठी आपण देखिबे. Okay, मु जोटा कहउतली, in some of the questions it has confused between the sections of BSA and Indian Evidence Act. रेसिस्टा वालाटा सेटा क्वेश्चन पर अछि. हाँ, right. So 4 और 6. 4 और 6 भितर से confuse करि दैछि. Okay, so सेटा just keep in mind. Okay, सेटा आपण mind रे रखंतु. So question 4 is asking, question 5, what is the purpose of relevancy of facts as outlined in section 4 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam? Okay, so section ta ठीक नहीं खाली, but question तारा content हिसाब रे अपन देखिले we can answer it. To determine admissibility of evidence, to exclude irrelevant evidence, to establish connection between facts and case at hand, or all of the above. Sir, all of the above. Yes, sir, all of above. All of the above. Yes, sir. Anyone else with any other answer? Okay. That is correct. All of the above. The relevancy of facts is crucial for determining what evidence can be admitted. Okay, ensuring that irrelevant evidence is excluded and establishing connection between fact and the case. So all of this will be okay important. So all of this will be correct. Right. Tapare asila under section 6 of BSA, what is the rule of res gesta? Eta Indian Evidence Act for section 6 thila. Okay, eti kon hochi section 4. So eta gote inso eta just taku change karibe. Okay, it allows hearsay evidence, it excludes hearsay evidence, it includes statements that form part of the same transaction. It is a principle that excludes all verbal evidence. What will be the answer? Sir, C. Option C. It includes statements that. Excuse me. Yes, that is correct. C of a okay res gesta. That is the concept
That is, it includes statements that form part of the same transaction. Okay, so then come to the next question. Which section of BSA deals with admissibility of electronic records? Section 3, Section 5, Section 2, or Section 6? Section 3. Document last रे ही define माने explain करिछि कि admissibility of electronic record. Sir, ମୁଁ ବି sure ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ sir ମତେ 3 ଲାଗୁଛି sir. Sir କାରଣ 5 ରେ sir section 2 ରେ ଆମର ଦଉଛି ତାର ଇଏ ଉପରେ ଆଉ 5 ଆଉ 6 ରେ concept ଅଲଗା ଅଛି. So you come here. So definitions रे ଆପଣଙ୍କର okay. Section 3 रे कौन पूछे आपनकर? Evidence may be given in any suit or proceeding for existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as herein declared to be relevant and no others. This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of law for the time being in force relating to civil procedure. ठीक अछि एटा हला सेक्शन 3 कोन कहूछ. सेक्शन 2 रे तो ऑब्वियसली आपनकर सब डेफिनेशंस उडा दैछ. ओके, क्वेश्चन मते स्पेसिफिकली कोन पचाउछि कि को सेक्शन अंडर रे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ओके, that electronic records will be admissible, right? So टू होबो ना नहीं? What will be the answer? Direct option to pakare, just see that. Okay, so it will be basically section 2 jotre ki definitions. Okay, our definitions re it explicitly states that electronic records are considered documents. Okay, so that in a sense addresses their admissibility. Okay, options jaha apankara deichi, you check all the options. 2 टा में देखिलु. Okay, 3, 5 and 6. 3 तो नुआ, 5 and 6 also you can check. Okay, so just go through that. So it will be section 2. Say definitions with rahi seta jauch. Okay, next question 8 को asandu. What does the term proved means under BSA 2023? A fact is considered proof if it is accepted by the defense. A fact is proved when the court either believes it to exist or consider its existence probable. A fact is proved only if there is eyewitness testimony. A fact is proved if it is documented in a government record. Sir, I have marked option B. Sir, B. Option B, sir. A fact that where the court either believes it exists or considers its existence so probable. That is correct. Okay, so B is the correct answer. Next, come to question 9. What is considered conclusive proof under BSA? Proof that can be contradicted by other evidence, proof that is accepted without question, proof that requires additional supporting evidence, or none of the above. जो जगह none of the above, जो जगह none of the above पड़िबो सेटा टिके आपण को देखिकी ओके टिके आउ थरे देखिया पे पड़िबो कैना इट adds a different dimension to the question. कौन हबो? Sir, eta
मते लागुची सर एटा माने ऑप्शन ए हबो किंतु सर एटा मु मारी तो देछि भूल किंतु एक्चुअली प्रूफ दैट मते एटा मु जोटा मारिछि बी मार देछि मते भूल लागुची प्रूफ दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन बट द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Anyone else? No, sorry, sir. The correct option is B, sir. B, sir. Anyone else? How कौन क्या आंसर दीचंदी क्या रहा? सर आई हैव मार्क्ड ऑप्शन बी और सेटा भी ठीक हबो कारण हम कंक्लूसिव प्रूफ रे पढिथिले कि जदि गोटे प्रूफ कोड द्वारा सैटिस्फाई हे जाउची देन विदाउट क्वेश्चन ऑफ द अनदर एविडेंस हमें आर नेक्स्ट येटा को भी हमें एडमिशन माने एविडेंस को एक्सेप्ट कर परिबे सो That is फॉर दैट correct. कांसेप्ट Okay. So conclusive proof, right? B will be sir. the correct answer. काली ही हमें admissions रे Supreme Court रो judgments देखु दिले. So we came to the conclusion that okay कि admissions कौन conclusive proof ना नो? Yes, sir. मु टिके सर पढियो रे भूल हितला टिके एक्चुअली बी ही ठीक नहीं नहीं मु एठी ओटे अलगा क्वेश्चन पचाउची मु पचाउची सर admission is not sir admission is a substantive evidence but not a conclusive very good. Okay, very good, because it is at the discretion of the one making the admission. सी आगु को जाएंगी तो मना भी कर दे परिबो. Okay, can take it back, right? So that is मु पचारली कि admission टा conclusive proof होबो कि नहीं, but for the question your answer is correct. Okay, এই question पे आपन को answer टा B ही होबो. Okay, that is proof that is accepted without question. So mark that. Now come to question 10. In the context of BSA, what is fact in issue? Fact that is not relevant to the case, a fact that has been conclusively proved, a fact which the existence, non-existence, nature or extent of any right or liability follows, a fact that is not admissible in court. Fact in issue are vitre kon? Sir, Option it will C, be sir. C. Direct definition. Okay, direct definition rohi achi. So that is C, a fact from which the existence, non-existence, nature or extent of any right or liability follows. Okay. So fact and issue it is directly related to the determination of rights or liabilities. Okay, in that particular case. So that is correct. C is the correct answer. So mark C. Next come to question 11. When did Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 receive the assent of President? Okay, that's a factual question. First class रे हमें पढ़िचु कौन होगा? C, sir. December 25. C, sir. Option C. Okay, December 25, 2023. तापरे which section of BSA 2023 outlines definition of evidence? Section So 1, section 2, 2. 3 and 4. Definitions 2, गुड़ा. sir. Okay, amara sabu achi section 2 re, right? So that is section 2. Okay, so this is the definitions, and accordingly the definition, all the definitions, okay, the evidence definition deji. So that is section 2. B is the correct answer. Under BSA 2023, which of the following is considered as an electronic record? Printed documents only, radio recordings only, email, server logs, documents on computers, or handwritten notes. What about it? Sir, option Sir, option C. C. Okay, so email, server logs, documents on computers. That is correct. Okay, तापरे finally हमें कौन देखुचु definition ले last जोड़ा दोची कि जो term गुड़ा एठी define है ही नहीं ताले ता definition गुड़ा okay if certain terms are not defined here then their meaning will be taken from either if it is defined in BNS, BNSS or the Information Technology Act. See last statement ta bhi mane rakhtibe, that is very important. Kahinki na prelims re gote emiti kichi gote
terms ye dabo jota ki amara ethi okay se term ta nothibo, right? So basically words and expressions used herein and not defined but defined in IT Act 2000, okay, BNSS or the BNS shall have the same meanings as assigned to them in the said act and Sanhita. Jadi it is define kara hai nathibo. Okay, so that is correct. Definitions, electronic record will be emails, server logs, and documents on computers. Now come to question 14. Which section of VSA 2023 deals with facts that are necessary to explain or introduce a fact in issue? Question 14. Section 4, 7, 9 or 10. Again, it's a factual question. What have you written? Section 7. So section 7. Option B. Okay, the factual question. So section 7 deals with facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. Okay, so B. So you have to remember, okay, the titles of the sections. At least जोड़ा most important जोड़ा पढ़िवार chances अच्छी. Prelims से सेमती भी 5-6 direct question आ ऊपरे आसे. Okay, so that is section 7. Next, question 15. What is the significance of section 6 in BSA 2023? It deals with rules of natural justice. It explains the concept of relevancy of facts forming part of same transaction. It outlines the procedures for cross-examination. It defines the powers of the court. So, a question ta hi tike problem hai ji. Jemti ki amara Again, it actually, if you see here, yes sir. section 6. 4 hai सेटा Indian Evidence Act संगरे से okay confuse करके सेटा 6 दे देची किंतु आंसर टा सही हिसाब रे okay actually 6 टा कोन motive preparation and previous or subsequent conduct ठीक अछि yes sir, that yes, is BSA रो but ये तदरे हमरो ऑप्शन से सेमती किछि नै ठीक yes, अछि तमन ये कोन एटा बेसिकली इधर यदि सेक्शन 6 रहला तले मोटिव आसी जिवो और एटा सेक्शन 4 ये एक्चुअली मीन करछि सेक्शन 4 कारण जदि आपण आंसर देखिबे तले सेटा रेस्ट जेस्टर ओके इट इज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर सो बी वुड बी द आंसर बट यू हैव टू चेंज इट टू 4 कारण 6 रे जा आपण यू नो एठी जो ऑप्शंस देछि ता भितरे मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो ए जो तीनटा एगुडा रेलेवेंट नुवा deals with the rules of natural justice, outlines procedure for cross examination, defines power of court. Kota bhi generally no one ta to bahut hi vague achi. So for B to be the answer, it has to be 4. Okay, 6 kanki eji kana Indian Evidence Act section 6 eta thala. Okay, next sorry question ta moro bhul hoy jechi ei to सेटा जोटा आपनकर ऐप रे जोटा भूलेची सेटा वंस हमें डिस्कशन परे तार करेक्शन ता कर दबा सेटा फुनी आपनकर करेक्टेड मार्क्स ता आछो ओके तो एई जो एई दीटा जगह क्वेश्चन हैज टू बी करेक्टेड ओके जोटा कि रेस्ट जेस्टर दीटा क्वेश्चन या दीटा क्वेश्चन से देछ yes which what does the term not proved means under BSA? A fact said not to be proved when it is disproved. A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. A fact is said to be not proved when the court is uncertain. A fact said to be not proved when it is contested by both parties. So not proved mane kon? sir option B Yes, okay sir, which is neither proved nor disproved, right? So 16 B, that is the correct answer. Now come to question 17. So question 17, under BSA, what is the significance of may presume? The court must accept the fact as proved. The court can accept the fact as proved unless it is disproved. The court can ignore the fact. The court must seek further evidence. sir, B. option B sir So the court can accept the fact as proved unless it is proved. Okay. जोटा हमें देखथिलु may presume और shall presume रो difference टा ठीक अछि yes sir
एठी कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया होची ओके डिस्क्रिशन दिया होची whereas shall presume रे obligatory said next question 18 which section of BSA addresses the relevancy of facts forming part of the same transaction तो एटा रेजिस्टर ऊपर कहले एक क्वेश्चन ओके तभी हाँ एटा भी एटा से सब इंडियन एविडेंस एक्ट संगे लिंक कर देछि ओके तो एठी कोन हबो सेक्शन 4 will be the answer 4 okay A will be the answer तो मु okay 4 मार्क not करिछि C किंतु से बोधे आंसर हाँ टा से नेकी सेटा ठीक से आंसर सते ताको पई नहीं जाइछि सेक्शन 6 हिसाब रे इंडियन एविडेंस एक्ट रो ठीक अछि तो सेटा आफ्टर द डिस्कशन वी विल करेक्ट दैट इन द ऐप ताले आपनकर जो मार्क्स उडा ना सेटा भी एडजस्ट हे जबो ओके यस नाउ कम टू क्वेश्चन 19 next question person to what does admission refer to under BSA a statement made by witness a statement made by party to the proceeding a statement made by the judge or a statement in a newspaper Sir, सर Or सेक्शन ऑप्शन बी सर a statement made by party to the proceeding okay से that is correct. डेफिनेशन पार्ट रे भी अछि एग्जैक्टली माने 15 रो डेफिनेशन तळे माने हमरे एक्सप्लेनेशन लिखा जाए हमें एक्सप्लेन करा जाए सेक्शन टा को ए वाला सेंटेंस ही अछि पूरा डायरेक्ट दे दे Yes that is correct statement made by party to the proceeding okay tapare how does BSA 2023 define conclusive proof a fact it already thare question asiche but tike alga type ro pachach কিন্তু question টা same how does BSA 2023 define conclusive proof a fact that can be disproved by other evidence a fact that is accepted without further evidence a fact that requires additional verification a fact that is questioned by the court sir, B. ऑप्शन बी सर मार्क बी a fact that is accepted without further evidence okay that is conclusive in context of BSA what is motive okay a reason for an act an accidental circumstance a type of evidence or a procedural step Sir, A. ऑप्शन ए a reason for an act okay तो बेसिकली एठी कोन पछछि मोटिव माने कोन अपन जने गोटे पर्टिकुलर कामटे कोन पई करूछि ओके कारण राइट तो रीजन फॉर एन एक्ट okay that is the motive refers to reasons behind an action particularly in legal cases and it is relevant in understanding the intention behind the act pachare intent kon achi seta janibara okay so that is basically a reason for the act so A will be the answer 22% what is relevance of facts showing the existence of a state of mind under BSA they are always irrelevant they are relevant when the state of mind is an issue or relevant they are relevant only in civil cases they are relevant only in criminal cases so question ऑप्शन 22 बी yes B is the correct answer they are relevant when the state of mind is in issue or relevant okay so seta relevant fact heitiba darkar ki seta okay fact in issue heitiba darkar facts showing a state of mind are relevant when the existence of that state of mind is either okay in issue or relevant to the case okay so B is the correct answer so seta mark kar diyantu B next come to 23 what does section 12 of BSA address okay facts showing existence of a state of mind or of body or bodily feeling admission made by parties the admissibility of digital evidence or the burden of proof so what will be the answer ऑप्शन ए सर A ऑप्शन ए direct acheta okay direct question यस सर facts showing the existence of a state of mind or bodily feeling right so there are importance kono section 12 ro okay so intention kimba setikar condition okay determine kariya pe eta important okay so question 23 that is answer would be A okay
Next 24 question. Under BSA, what is the significance of facts necessary to explain or introduce a fact? Okay, significance of facts necessary to explain or introduce a fact. They are irrelevant and should be excluded. They are necessary to understand the context of fact in issue. They are used to confuse the court. They are used only in civil cases. So, what of answer, Aaron? B is the, according to section 7, B is the correct answer. yes. They are necessary to understand the context of the fact in issue. Okay, so if basically tara history kono ki background kono, okay, so that is relevant to the case. Okay, so B is the answer for 24. Next, come to 25. Direct question, factual question. What does section 15 of BSA define? Conclusive proof, admission, relevant facts, the presumptions. Admission. What is the answer? Option B, sir. Admission. Admissions will be the answer. Now 26% to what does the term prove indicate in the context of BSA? A fact that is challenged by the defense, এটা already thare ame dekhi sarchu question ta khali options change hoji ethre. The fact that is admitted by the plaintiff, a fact that the court believes to exist or considers probable, a fact that the jury finds convincing. Okay, so what will be the answer? Question 26. Option C, sir. The fact that court believes to exist or consider probable. Option B. C, sir. C. Court C. believe kariba darkar ki se jinsa ta exist Yes, karuchi. a fact that the court believes or exists or considers probable. In BSA, what is meant by disproved? A fact that is confirmed by evidence, a fact that the court believes does not exist, a fact that is not contested, a fact that is proven without doubt. Sir, B. 27. Okay, a fact that the court believes does not exist. That is, disprove means the court, kemiti court believe karibo. After evidence has been presented before it. So after considering the evidence, believes a fact does not exist. Right? Tahale janki seta disprove hobo. Right? So B will be the answer for 27. Tapare 28%. What section of BSA 2023 deals with facts showing existence of state of mind or of body or bodily feelings? Already eta main dekhi sarchu direct question Yes, ta. sir. Section 12, sir. Section 12. 12, sir. It repeated also. Okay. Only language of the question is changed, but matter Yes, is same. Next 29% under BSA, what is fact in issue? A fact that has no relevance to the case, a fact that is admitted by both parties, a fact that is directly related to the case, a fact that is not contested by the parties. Fact in issue. 29. C. So, C, a fact that is directly related to the case. A fact that is directly related to the case. Okay, and it affects the determination of the outcome of the case. Okay, so C will be the answer for 29. Tapare 30 ka asantu. What does motive refer to in the context of BSA? An accidental act, a reason behind an act, a type of evidence, a legal procedure. Motive. Already Sir, we have seen reason. Okay, it will repeat a reason behind an act. That is motive. What does the term relevant mean under BSA? Facts that are not important to the case, facts that are connected with facts in issue, facts that are only important in civil cases, or facts that are disputed by the parties. Okay, so what is the meaning of relevant? Question 31. Option B, sir. Facts that are connected with the fact in issue. Facts that are connected with the facts in issue. Okay, so that will help in either proving or disproving. Okay, so those are basically relevant. Okay, facts that are connected with the facts in issue. So B would be the answer. Question 31.
Next, what is the role of admissions under BSA? To exclude evidence, to provide statements that suggest inferences about facts, to replace evidence with assumption, to provide legal advice. So, what is the answer for question 32? Option B, sir. To provide B, statement to that provide suggest. statements that suggest inferences about facts. Okay, Yes, sir. so B is correct. Now come to question 33. What is significance of facts which are occasion, cause, or effect of facts in issue or relevant facts? What is the significance of these? They are excluded from evidence. They are considered irrelevant. They help in understanding the circumstances surrounding the case. They are considered only in criminal cases. So, 33 the corner of answer. What is the answer that you So have I given? have marked option C. C. Yes, C is correct. Okay, C is the Yes, sir. correct answer. Okay, so they help understanding the circumstances surrounding the case. Okay, so C is the answer for 33. Next, 34. What is fact in issue? A fact that is always evident, a fact that is disputed by the court, by the court code. A fact that affects the rights or liabilities in a case, a fact that is universally agreed upon. कौन होगा बेटा 34? So option C, sir. A fact that affects the rights or liabilities in a case. That is correct. Okay, a fact that affects the rights or liabilities in a case. Next, come to 35. How does BSA define disproof? Eta aguru we already hame dekhichu. Okay, so a fact that the court believes does not exist. Okay, same option hi achi. So takko mu author discuss karun. What is the relevance of facts necessary to explain or introduce under BSA? So again, this is again repeated once more. कौन होगा बेटा? Yes, sir. Sir, option A, sir. According They to section provide 7, they provide background information. background information. Okay, so that is correct. Okay, similar question already हमें answer करिछु. Next 37%. What does may presume mean in context of BSA? Again, repetition. Okay, may presume. So, कौन होगा answer वाला? Options भी प्राय same ही होती. The court is required to prove the fact. The court can assume the fact is true unless disproved. Court must disregard the fact. Court can only consider the fact if both parties agree. B होगा? Yes, sir. Option B. B, sir. The court can assume the fact is true unless disproved. What is the significance of admission? 38. It is a confession. It is a statement suggesting an inference about a fact. It is a legal procedure. It is a type of evidence that cannot be used in a court. कौन होगा बेटा? Sir, option B, sir. It is a statement suggesting an inference about a fact. That is correct. Okay. It is a statement suggesting an inference about a fact. It is a confession. Eta कौन? Is it wrong? कल सेदिन जोटा हमें डिस्कस करथुलु कौन कि all confessions all confessions are admissions, but all admissions are not confessions. Okay, so B will be the answer. What is meant by facts in issue under BSA? Facts that are not contested. Okay, so again, let us repeat it. Facts that are irrelevant, facts that affect determination of the case, facts that are universally accepted. कौन होगा? खाली Option C, sir. options टा okay बदलैछि. Facts that affect the determination of the case. तापरे ओके जोटा सेक्शन 6 जेटा माने मिसरीड करथिला एबे सेक्शन 6 ऊपर से दोछि. ओके, मोटिव. What does motive refer to in legal terms under BSA? What is motive? An accidental reaction, a reason behind person's action, type of evidence, or a legal formality. So, reason behind a person's action. It will be repeated. Okay. Under BSA, what does the term proved mean? A fact that is doubted by the court, a fact that the court believes to exist or considers probable, a fact that is supported only by oral evidence, a fact that is not supported by any evidence. So, what will be the answer? Option B, sir. B, sir. Option B. Yes, sir. B.
Okay, so a fact that the court believes to exist or considers probable, that is the answer. So B will be the answer for 41. Number 42 question, what is the importance of facts showing existence of state of mind? Again, it will be repeated. Then they are only relevant in civil cases. They help to establish intent or motive. They are not admissible in evidence as evidence. They are not used to establish physical evidence. Kali option should alga alga देइछ. कौन बता ले? Sir, B. Option B, sir. B, sir. जोड़ा कि Intention से and motive to establish. they help to establish intent or motive. Okay. Then 43. What does the term not proof signify? Okay, a fact that has been disproved, a fact that has been not been either proved or disproved, a fact that the court accepts without evidence, or a fact that is contested by both parties. कौन बेटा? Sir, B. Option B, sir. A fact that has not been either proved or disproved. Under section under BSA 2023, what is relevance of admissions? Again, repetition. They are always conclusive proof. They suggest inferences about facts in issue or relevant facts. They replace the need for evidence. They are not admissible in court. So here, what will be the answer? Option B, sir. B. Option B, thus they suggest inferences about facts in issue or relevant facts. What does conclusive proof mean in the context of BSA? Again, it already I mean, proof that can be disputed by other evidence, proof that is accepted without question, proof that requires further evidence, or proof that the court must verify. What will be the answer? Sir, B. Proof that is accepted without question. Okay. Conclusive proof. Right? So that is 45. Now come to 46. Which section of BSA addresses the concept of admission? Okay. So 15 ru apanakara seta start hochi. Okay. Yes, sir. So, okay, so section 15 will start hochi apanakara. So section 15, that is option B. It defines the concept of admission. Then 47%, according to BSA, what does documentary evidence include? Only printed documents, only handwritten notes, both printed and handwritten records, only photographs. Option C. Option C, sir. Okay, so C is correct, both printed and electronic records. Number 48, under BSA 2023, which section deals with facts showing existence of state of mind? Already हमें देखी सारी थी. Okay, कौन थी? Section 12, sir. Section 12. Okay, that is A question, A option. Which of the following is not considered as a fact? It a first question. Person's intention, mental condition, legal opinion, or a physical act, which is not considered as a fact. C. Legal opinion. Okay, legal opinion is not considered as a fact. Okay. Then last question, देखो question number 50. What does section 1 of BSA primarily cover? Definitions and preliminary provisions, relevancy of facts, admissions and confessions, or documentary evidence? Sir, A. Option A, sir. Definitions and preliminary provisions. Okay. But the thing is that if you see here, okay, of course, preliminary provisions that is correct. Definitions section 2 re. Because the short title, application and commencement. Okay, first chapter ta preliminary. So CA कहुची किंतु definitions. Okay, so particularly कहुची कि section. Okay, 1 re कौन देची. Right. Chapter 1 रे कहते हैं अलग आंसर था but section 1 रे कौन देख से पचाची. Section 1 रे definition नहीं. अच्छी की. Short title, application and commencement. Okay, जोटा की chapter preliminary under रे अच्छी. तो ये particularly पचाची section 1 रे कौन अच्छी. Okay, definitions and preliminary provisions. Okay, fine. Preliminary provisions से हिसाब रे अपना कोई परिबे.
because chapter name is preliminary provision tar deichi. Okay, but tethare se miseichi definitions and preliminary provision. Definitions apanଙ୍କର section 1 रे कोठी भी नहीं, apanଙ୍କର nature of scope कहला. Okay, short title, application or commencement कहला. Okay, nowhere it has defined anything. It should be defined करने, right? So keep that in mind. Okay, so कौन हबो एटा जहाँ देची ता भितरु obviously A will be the answer, but the proper एठी आपनकर okay application, okay, commencement, short title, application and commencement एटा proper answer हेता, right? काहे कि definition ता 2 रे अछि, but MCQ परीक्षा रे बहुत टाइम रे एमती हबो कि इधर ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो जोटी कि जोटा बेस्ट आंसर सेटा हमर ऑप्शंस रे नथिबो, ताले सेही केस रे हमें कोन करिबा ना हमें देखिबा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कोटा अछि, ता भितरु जो से देइछि बेस्ट आंसर कोटा सेटा नबो. उल्टा भी केबे केबे हेइ पर आउर टिके डिफिकल्ट सपोज गोटे क्वेश्चन टे पचारला, ओके, आउ चारिटी ऑप्शन देइछि, से चारिटा जक ऑप्शन एक्चुअली ठीक अछि. ओके, ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, फुल किछि भी होबन किंतु चारटा भी ठीक हे परिबनि केना गोटे ही मते आंसर करिवार अछि, ताले सेठी मु भी कोन भाबुछि ना मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जोटा सेटा को मते मार्क करिवार अछि, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर even if all 4 are correct or seem to be correct. So which is the most appropriate, that has to be chosen. Multiple choice question the concept है जेतु गोटे ही आंसर हमारा वैलिड रहबो, गोटे ही आंसर ठीक रहबो, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स रो कांसेप्ट हमारा एठी नहीं. ओके, बुझि पाले. So these are the 50 questions section 1 to 20 भितरे, and tomorrow we will have the okay तार जो mains ro, okay, same दिन so 1 hour you will write, then 1 hour we will discuss. Okay, तार pattern ता मु कहि दोछि ए section 1 to 20 रो. So just like आपनकर exam रे, okay, जेमति पढुछि, that is 10 marker, 15 marker और 5 marker. Okay, so गोटे 15, okay, 10, 10 and 10 and 5 हैला. पांचटा क्वेश्चन पडिबो, 50 मिनिट आपन दिया जिवो काहे कि ना. ओके, एटा पार्ट आपन प्रोसीजरल लॉ रो 150 मिनिट रे 150 मार्क, ठीक अछि. एठी हमें सेते यू नो 2.5 hours रो टेस्ट करूनु, 1 hour रो टेस्ट करूछु. ओके, 1 hour भी नो 50 minutes रो टेस्ट हबो, 50 minutes से 50 marks. ओके, सो एटा आपनकर स्ट्रक्चर रहइबो, गोटे 15 मार्क रो क्वेश्चन रहइबो, तीनिटी 10 मार्क रो क्वेश्चन रहइबो आ गोटे 5 मार्क रो क्वेश्चन रहइबो. टोटल 50 मिनिट्स आपनको दिया हो, जेतिकी मार्क सेतिकी मिनिट. ये 5 मार्क क्वेश्चन 5 मिनिट रे सारिबे, तीनटा 10 मार्क क्वेश्चन 10 मिनिट रे सारिबे, 15 मार्क क्वेश्चन ओके 15 मिनिट रे सारिबे. आ ईच क्वेश्चन रो खाली 5 मार्क क्वेश्चन ता छाडी देले, बाकी 10 मार्क और 15 मार्क सब क्वेश्चन रो गोटे प्रॉब्लम कंपोनेंट रहइबो. ओके, सेही सेक्शन 1 to 20 भितरे किछि गोटे प्रॉब्लम. ओके, आ प्रॉब्लम ता आपण केमति प्रिपेयर करिवे, जोटा मु कहितली इलस्ट्रेशन जोटा डायरेक्ट रे देछि ताको बहुत भलो रे बुझिबे. ओके, देन सेउ थ्रू ही ओके बेस करी कि आपनकर illustration आपनकर problems based question आसे. Understood? Yes, sir. Okay, so now you can take a break for 10 minutes. 10 minutes for we will start the theory class. Okay, so kali hame 26 ta padithulu. Okay, so that is very very important section which we had seen. So aji hame 30 parjanta sariba. Okay, we'll complete till 30. We'll take a break for 10 minutes. 8टा 6टा 7 ହେଇଛି, 6ଟା 15 ରେ start କରିବେ. हाँ କୁହନ୍ତୁ. सर कल जो क्वेश्चन देथिले तार आंसर लेखिथिलु बाकी आंसर ऑफलाइन हाँ क्लास होता पठेଇ दियନ୍ତୁ. काली जो ठीक है, क्वेश्चन टा ठीक है। ଦେଇଥିଲି, ठीक ଅଛି ତ, Yes, sir. regarding dying declaration. Okay, Yes, sir.
and the problem related to it जो मैंने करचंदी you write and I told you to send it. Okay, तो ताको लेखी की पठे देबे आपण गोटे PDF करी की you can send it to me. I'll evaluate and send that. Okay, Okay. fine. So we'll stop here to take a break. 6:15 we will start the theory class. Yes, sir.